definition of conjunction, how many kinds of conjunctions are there with examples, and at the end of the video we will solve some exercises which is based on the topic conjunction. So without wasting any time, let's begin with our class. What are conjunction? So first of all we will see the definition. A conjunction is a word. What a conjunction? A conjunction is a word that joins words, phrases, clauses and sentences. I am going to repeat the definition. Listen carefully. A conjunction is a word that joins words, phrases, clauses and sentences. Let us understand better with the help of some examples. Have a look. First example is, most children like cookies and milk. There are two words, cookies and milk. Here we will use conjunction and, and to join two words with each other. So here and is a conjunction. Next is, Diya and Riya are neighbors. Diya and Riya. Again, two words, two nouns. Diya and Riya. Here we will use conjunction and to join two words with each other. It is also same class and kind. Next is, Tia is tall, but her sister is short. In this sentence, Tia is tall. It is a complete statement. Tia is tall. It gives complete sense, right? Tia is tall, but her sister is short. So there are two statements. First is, Tia is tall, and the second one is, her sister is short. There are two statements. There are two independent statements. So here we will use conjunction but to join two sentences with each other. Tia is tall. It gives a complete sense. It is a sentence. Next is, her sister is short. It is also a sentence because it gives a complete sense. So Tia is tall. Her sister is short. There are two sentences. There are two independent sentences and we will use conjunction but to join two sentences with each other. It is a contrast between Tia's height with her sister's height. Next is, I like Ayush because he is a hard-working student. So there is a statement. First is, I like Ayush. It is a statement. It is a sentence because it gives a complete sense. I like Ayush. It is a simple sentence. Next sentence is, he is a hard-working student. It is also a complete sentence because it gives a complete sense. He is a hard-working student. So there are two independent sentences. First is, I like Ayush. Second is, he is a hard-working student. Here we will add conjunction because to join two independent sentences with each other. Because shows the reason. I like Ayush because he is a hard-working student. He is a hard-working student. That's why I like Ayush. So here because gives the reason for liking him. So because is a conjunction. So here words like and, but and because are used to join one sentence to another, right? There are some words like and, but and because and they used to join one sentence to another. These words that join different ideas together and termed as conjunction. Conjunctions can be put in following two categories. Have a look. There are two categories. First is coordinating conjunctions and second is subordinating conjunctions. So how many kinds of conjunctions are there? There are two types of conjunctions. First is coordinating conjunctions and second is subordinating conjunctions. So first of all, we will see what is coordinating conjunction. Have a look. Coordinating conjunction. Coordinating conjunctions join like with like. It is a very simple definition. Coordinating conjunctions join like with like. Like with like means they join a noun with another noun or an adjective with another adjective. Overall, we can say that it joins words to words, phrases to phrases, clauses to clauses. Let us understand better how they can how they can join two words with each other, how they can join two phrases with each other, how they can join two clauses with each other. So let's see. First is word to
word. We will see the same example. Most children like cookies and milk. Cookies and milk. There are two words. So here and is a conjunction. It joins two words with each other. Cookies and milk. It joins cookies with milk and joins cookies with milk. So here and is a conjunction. It joins words to word. Next is phrase to phrase. How they can join two phrases with each other. Have a look. The gold is hidden at the beach or by the lakeside. This is an example. The gold is hidden at the beach or by the lakeside. So here, at the beach is a phrase. Second phrase is by the lakeside. So there are two phrases. First is at the beach, second is by the lakeside. Here, conjunction or joins two phrases with each other. It joins phrase to phrase. Next is clause to clause. How they join two clauses with each other. How they can join two clauses with each other. Have a look. There is an example. For example, what you say and what you do are two different things. What you say, you is a subject, say is a verb. And what you do, again, you is a subject and do is a verb, doing or action word. So what you say, it is a clause. And second clause is what you do. So here again subject and verb. And in the first sentence also subject and verb. So there are two clauses. First is what you say, second is what you do. And here we will use conjunction and to join two clauses with each other. So the answer will be what you say and what you do are two different things. So I hope it's clear. Coordinating conjunctions. Join like with like. For example, words to words, phrases to phrases, clauses to clauses. Let us understand better with the help of some more examples. Have a look. Night came on, the room grew dark. There are two statements. First is night came on and second is the room grew dark. These are two independent sentences. They are of equal rank and orders. They do not depend upon each other in any way. We join these two independent sentences with the word and. Night came on and the room grew dark. Night came on and the room grew dark. There are two independent sentences. We will use conjunction and to join both independent sentences with each other. Thus, and is a coordinating conjunction. Next example is I called him. He did not answer. I called him. It is a sentence. It gives a complete sense. Next is he did not answer. It also gives a complete sense. So I called him. He did not answer. They are two independent sentences. Let us join these independent sentences with the word but. B-U-T, but. So the answer will be I called him but he did not answer. So here we will use conjunction but to join two independent sentences with each other. So but is a coordinating conjunction. We can define a coordinating conjunction as one that joins sentences or words of equal rank and order. Don't forget it. We can define a coordinating conjunction as one that joins sentences or words of equal rank and order. We also call a conjunction coordinating when it joins single words together because single words must be of the same rank or order. Thus, in the sentences like 2 and 2 make 4 and is a coordinating conjunction. When we see the example 2 and 2 make 4 and is a coordinating conjunction because it joins two words with each other. So, coordinating conjunctions make coordinating clause and they are of four types. First is cumulative conjunction, second is alternative conjunction, third is adversative conjunction and fourth is irritative conjunction. So, there are four types of coordinating conjunctions. So, now we will see one by one.
So first of all, we will see what is cumulative conjunction. So first is cumulative conjunction. Cumulative conjunctions that include and, both and, as well as, not only but also, they are used simply to combine two statements. Let us understand better with the help of some examples. Have a look. Ram sang and Mohan danced. Here and is a cumulative conjunction because it joins two simple statements with each other. So whenever we are going to join two simple statements with each other, we will use conjunction and we will use cumulative conjunctions like and, both and, as well as, not only but also. Okay. Next example is they were not only punished but also fined. They are not only punished. Here, not only but also fined. So there are two statements. They were not only punished but also fined. So overall we can say that cumulative conjunctions like and, both and, as well as, not only but also, they are used simply to combine two statements with each other. Simple. Next is alternative conjunction. Alternative conjunctions that include either or, neither nor, else, otherwise, or. They are used when there is a choice between two statements. Whenever there is a choice between two statements, it is called alternative conjunction. For example, he will come or we shall not call him again. Here, or is alternative conjunction. There is a choice between two sentences, right? Next is either this is a fish or this is a serpent. So there is a choice. Either this is a fish or this is a serpent. There is a choice between fish and serpent. So or is alternative conjunction. Next is neither he came nor sent any letter. There is a choice in this sentence. So overall we can say that alternative conjunctions that include either or, neither nor, else, otherwise, or, they are used when there is a choice between two statements. जब हमें दो स्टेटमेंट के बीच में किसी एक को चूज करना होता है, जब हमें चॉइस मिलती है दो में से किसी एक को सेलेक्ट करने की, तो वो है हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन. तो जिस वर्ड से हम दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करके चॉइस शो करते हैं, इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव कंजंक्शन. फॉर एग्जांपल, ही विल कम और वी शैल नॉट कॉल हिम अगेन. So there is a choice in this sentence. Second is either this is a fish or this is a serpent. या तो वो फिश है या फिर वो serpent है. दोनों में से एक ही हो सकता है. Okay? दोनों नहीं हो सकता. So it is alternative conjunction. और next is neither he came nor sent any letter. ना ही वो आया ना ही उसने कोई लेटर भेजा. Here neither nor is alternative conjunction because there is a choice between two statements. तो या तो चॉइस में दो में से कोई एक होगा या फिर दोनों नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि दो अगर सेंटेंस लिखे हुए हैं तो दोनों ही एक्सेप्टेबल हो. नो, इट्स रॉन्ग. या तो दो में से कोई एक सही होगा या फिर दोनों ही सही नहीं होंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आइदर दिस इज अ फिश और दिस इज अ सर्पेंट. या तो ये फिश है या फिर ये सर्पेंट है. दोनों नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है. और कभी कभी या तो फिर दोनों नहीं होगा, या तो कोई एक होगा या फिर दोनों नहीं होगा. नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, नाइदर ही केम नॉर सेंट एनी लेटर. हियर नाइदर ही केम, ना ही वो आया ना ही उसने लेटर भेजा. यानी कि जो दो चॉइस दी गई है उनमें से दोनों काम नहीं हुआ है. तो या तो दो चॉइस जो रहेंगी उनमें से एक हमें चूज करना होगा, एक काम होगा, या फिर दो चॉइस जो रहेंगी दोनों में से दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग होंगे, दोनों ही एक्सेप्टेबल नहीं होंगे. सो इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव कंजंक्शन. अल्टरनेटिव कंजंक्शंस दैट इंक्लूड आइदर और से हम यूज कर सकते हैं, नाइदर नॉर, एल्स, अदरवाइज और लगा करके हम अल्टरनेटिव कंजंक्शंस बनाते हैं. दे आर यूज्ड व्हेन देयर इज अ चॉइस बिटवीन टू स्टेटमेंट. जब दो स्टेटमेंट में हमें चूज करना होता है कोई एक को या फिर दोनों ही नहीं होती है, लेकिन हमें चॉइस मिलती है सेंटेंस में. देखिए तीन सेंटेंस है, यहाँ तीनों में चॉइस है, दो डबल डबल ऑप्शन है. तो जब हमें ऑप्शन मिलते हैं, जब हमें चॉइस मिलती है, तो वो हमारा
अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है जो दो स्टेटमेंट को जोड़ता है. So it is called alternative conjunction. So first is cumulative conjunction. It is very simple. Cumulative conjunction means when we are going to join two simple statement with each other, it is called cumulative conjunction. जब हम दो अलग अलग स्टेटमेंट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं जिस कंजंक्शन से, तो वो कंजंक्शन हमारा होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन. और जब हमें दो सेंटेंस की चॉइस मिल जाती है, जब हमें किसी एग्जांपल में चॉइस मिल जाती है कि दो में से कोई एक होगा या फिर दोनों नहीं होगा, लेकिन हमें चॉइस मिलेगी, दो ऑप्शन रहेंगे, तो वो हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन होगा जिस कंजंक्शन से दोनों वर्ड्स जुड़े होंगे. फॉर एग्जांपल आइदर और से हो सकता है, नाइदर नॉर, एल्स, अदरवाइज और. तो ये सारे हैं हमारे अल्टरनेटिव कंजंक्शंस के सैंपल्स. सो आई होप इट्स क्लियर. क्यूमुलेटिव कंजंक्शन मींस they are used simply to combine two statements. Alternative conjunction, they are used when there is a choice between two statements. Let's see the next one, that is adversative conjunction. Adversative conjunction क्या होता है? Adversative conjunctions that include but, still, only, yet, whereas, nevertheless, however, while, they are used to join two opposite statements. So overall we can say that adversative conjunctions are used to join two opposite statements. दो अलग अलग तरह की स्टेटमेंट को जोड़ने का जो काम करता है वो है हमारा adversative conjunction. Let us understand better with the help of some examples. Have a look. First example is he worked hard but failed. He worked hard. उसने मेहनत बहुत ज्यादा किया but failed. So there are two opposite statements with each other. So here we will use conjunction but, adversative conjunction, that is but, to join two opposite statements. Next is I did not work hard yet passed. It is also opposite with each other. I did not work hard yet passed. So here yet adversative conjunction, it joins two opposite statements with each other. Next is elative conjunction. Elative conjunctions that include therefore, so, for, then, so, hence. They are used there where a result comes out of the other thing. Let us understand better with the help of some examples. Have a look. First example is he worked hard, so he got good marks. He worked hard, so he got good marks. So here so is relative conjunction because it shows a result. Next is he ran fast. He ran fast, therefore he won the race. So there is a reason. He ran fast. This is a reason to win the race. So here therefore is a conjunction. It joins two statements with each other. So it is relative conjunction. I felt it for it was too difficult. So here I felt it for it was too difficult. So here for elative conjunction it shows the result. So there are three examples of elative conjunction. They are he worked hard, so he got good marks. So here he worked hard. It is a principal clause. Okay. So he got good marks. So here so shows the result. It is a result comes out of the other thing. Next is he ran fast, therefore he won the race. So here therefore elative conjunction, it shows a result comes out of the other thing. Next is I felt it. It is also a principal clause. For it was too difficult. So here for is elative conjunction. So overall we can say that there are four kinds of coordinating conjunction. First is cumulative conjunction, second is alternative conjunction, third is adversative conjunction and fourth is elative conjunction. Cumulative conjunction क्या होता है? Cumulative conjunction जब हम दो सिंपल स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं जिस कंजंक्शन से, वो है हमारा cumulative conjunction. कौन कौन से कंजंक्शन है cumulative? वो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट है अल्टरनेटिव कंजंक्शन. अल्टरनेटिव कंजंक्शन जब हमें सेंटेंस में दो चॉइस मिलती है, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा या फिर दोनों नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस में चॉइस रहेगी. तो जब हमें एग्जांपल में किसी भी सेंटेंस में चॉइस मिलती है तो वो है हमारा
अल्टरनेटिव कंजंक्शन। कौन कौन से अल्टरनेटिव है? आइदर और, नाइदर नॉर, एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होता है? एडवर्सेटिव कंजंक्शन जैसे कि बट, स्टिल, येट, वेयर एज, एटसेट्रा। ओके, ये क्या करते हैं? ये दो अपोजिट स्टेटमेंट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड बट फेल। मेहनत उसने किया लेकिन परिणाम क्या हुआ? फेल हो गया, अपोजिट रिजल्ट मिल गया तुरंत। तो जब हम दो अपोजिट स्टेटमेंट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं तो वो कंजंक्शन होता है हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। कौन कौन से हैं? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन हमें रिजल्ट बताता है, जो रिजल्ट, जो आउटकम मिल रहा है वो पता चलता है इलेटिव कंजंक्शन से। तो जो सेंटेंस को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है वो है इलेटिव कंजंक्शन, जो दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे जिससे हमें रिजल्ट पता चले। फॉर एग्जांपल, ही वर्कड हार्ड सो ही गॉट गुड मार्क्स। उसको मार्क्स अच्छे मिले, क्यों मिले? क्योंकि ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत की थी, इसलिए। यहाँ अपोजिट स्टेटमेंट नहीं है, मेहनत की थी इसलिए अच्छे मार्क्स मिले, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन हमें रिजल्ट पता चल रहा है, इसलिए ये इलेटिव कंजंक्शन है। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था एडवर्सेटिव कंजंक्शन, उसमें दो अपोजिट चीजें मिलती हैं। ही वर्कड हार्ड बट फेल, मेहनत उसने किया लेकिन फेल हो गया, परिणाम क्या मिला? उसका रिजल्ट, वो अपोजिट है। तो जब हमें अपोजिट स्टेटमेंट मिल रही है, एक पॉजिटिव मिल रही है, दूसरी अपोजिट मिल रही है, तो वो वहां पर जो हम कंजंक्शन ऐड करेंगे वो होगा हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। और जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी कि हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्लॉज, तो वो है हमारा इलेटिव कंजंक्शन। So I hope it's clear. There are four types of conjunction. Coordinated conjunction, not conjunction. Okay. There are four types of coordinating conjunction. First is cumulative. Second is alternative. Third is adversative. Fourth is elative. So now we will see the next topic, that is subordinating conjunction. What is subordinating conjunction? Subordinating conjunction क्या होता है? अब हम ये देखेंगे। अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। तो चार तरह के होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? हैव अ लुक। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस join the dependent clause to the other clause on which that is dependent for its meaning. These conjunctions are like after, if, that, because, though, although, till, before, as, unless, since, when, where, why, else, how, then, until, etc. So these are called subordinating conjunction. Coordinating conjunction जो चार तरह के थे वो चारों क्या करते थे? वो चारों वर्ड को वर्ड से जोड़ने का काम करते थे, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने का काम करते थे, सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने का काम करते थे, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ने का काम करते थे। बट जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है जो कि डिपेंडेंट हो। यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करता था? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता था, यानी कि दोनों सेंटेंस जो कि आपस में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं उन दोनों को जोड़ने का काम करता था हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के चारों तरीके। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ दो डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, यानी एक क्लॉज दूसरी क्लॉज पर डिपेंड होगी। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड बेटर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। हैव अ लुक। फर्स्ट इज my grandfather has died. I saw you last. So we use the word since to join these sentences. My grandfather has died since I saw you last. Thus, since is a subordinating conjunction. Okay, so there are lots of subordinating conjunction like after, if, that, because, though, although, till, before, as, unless, since, when, where, why, else, how, then, until, etc. So subordinate conjunctions join the dependent clause to the other clause on which that is dependent for its meaning. जब हम सेंटेंस की मीनिंग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो एक सेंटेंस है वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, दूसरे पर निर्भर है, तभी कंप्लीट सेंस देगा जब दोनों सेंटेंस आपस में लिखे जाएंगे।
तो ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कौन? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट फ्रेजेस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को आपस में जोड़ देता है। ओके, इंडिपेंडेंट मतलब जो कंप्लीट सेंस आपको दे रहे हैं, यानी एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो हमें पूरा सेंस दे रहा है, दूसरा सेंटेंस है वो भी हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, और जब उन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं तो वो कंजंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके चार तरीके होते हैं। कौन कौन से हैं? क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दो डिपेंडेंट क्लॉज को, यानी जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस दूसरे के बिना अधूरा है, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसको जोड़ने का काम जो करते हैं कंजंक्शन, वो है हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन कौन से हैं? देयर आर लॉट्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक आफ्टर, इफ, that, because, though, although, till, before, it, unless, when, since, where, why, else, how, then, until, etc. So there are lots of subordinate conjunction. बस ये हमें ध्यान रखना है कि subordinate conjunction जो है वो दो डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, जिनकी हम मीनिंग जब निकालेंगे सेंटेंस की तो पता चलेगा कि एक दूसरे पर डिपेंड है। तो डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ वी विल सॉल्व सम एक्सरसाइजेस। हैव अ लुक। If you have any confusion, any doubt regarding the topic conjunction, basically subordinating conjunction and coordinating conjunction, if you have any confusion, any doubt, you can ask me. Till then, keep studying, stay at home and be safe. Goodbye.